So this is the question number 27 from CBSE midterm paper 2021, and this question comes under the topic file handling in Python. So in this particular question, a text file which is named as notes.txt has been given to you. उसका कुछ content given है and along with content आपको एक Python का code given है और आपसे पूछा गया है कि इस particular code का क्या output आएगा. So in order to get the output, let's first do the line numbering of this code so that we will be able to figure out what each and every line is doing. Okay. Now the first thing is at line number 1 it is saying you are opening a file notes.txt. If you recall जो open function होता है उसके अंदर आपके दो पैरामीटर्स होते हैं मेजरली. फर्स्ट वन इज फाइल नेम, अनदर वन इज एक्सेस मोड. सिंस इसके अंदर कोई एक्सेस मोड पास नहीं किया गया तो डिफॉल्ट मोड क्या रहता है आपका रीड मोड. ओके, ध्यान दीजिएगा अगर while opening a file अगर कोई एक्सेस मोड प्रोवाइड नहीं किया गया तो इन दैट केस इट इज द डिफॉल्ट मोड क्या है आपका रीड मोड. Now in line number 2, it has been given f.seek 29. If you see this statement, तो क्या है आपका f.seek 29. Similar to the open function, seek function के अंदर भी आपके दो पैरामीटर्स होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज ऑफसेट, सेकंड वन इज रेफरेंस पॉइंट. इसके अंदर भी डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस पॉइंट वी विल मूव आवर ऑफसेट. जनरली रेफरेंस पॉइंट की क्या वैल्यूज होती हैं आपकी 0, 1 एंड 2. सिंस कोई भी वैल्यू पास नहीं है तो 0 इट मींस तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 0. 0 मींस बिगिनिंग ऑफ द फाइल. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से व्हेन वी आर ओपनिंग ए फाइल इन द रीड मोड तो इनिशियली क्या होता है आपका कर्सर कहां होता है बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे. But since in the line number 2 you are using f.seek29, that means it will shift the position of the cursor to the 29th byte. Okay. After that, at line number 3, what are you doing? You are trying to read the content from the file. So let's say this is the 29. We don't know which is the 29. We need to count it for. But जो भी क्या होगा, once your जो आपका कर्सर है वो 29th बाइट पोजीशन पर है, आप क्या कर रहे हो उसके बाद आप f.read की हेल्प से यू आर रीडिंग जो जितना भी कंटेंट बचा है आपका टेक्स्ट फाइल का. यानी कि 29th बाइट के बाद जितना भी कंटेंट आपका बचा है उस टेक्स्ट फाइल में वो कंटेंट कहां आ जाएगा आपका एस के अंदर. ठीक है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू एट लाइन नंबर 4 यू नीड टू प्रिंट एस इन द line number 4. So now we'll see the options and then we'll try to figure out which is the correct and which is the not correct. The first one is the way to get started is to, so this is the incorrect. Why it is incorrect? Because it is starting from the byte number first. हमारा कर्सर कहां पे था बाइट नंबर 29 पे. बिकॉज ऑफ द लाइन नंबर 2 हमारा कर्सर कहां पहुंच गया लाइन नंबर 29 पे. So it is not possible to have the first starting bytes. Quiet talking and begin doing. It seems to be the correct option. Why? Because okay 29 bytes. It seems like कि 29 bytes आपकी यहाँ से start होगी. Otherwise, what you can do, you can count and you can figure out the exact answer as well. This is not possible. Why? Because first few bytes cannot be in the part of the string, and it is reversing the string. It is also not a possible case. तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि हाउ टू फिगर आउट ए क्वेश्चन कि अगर कोई फंक्शन आ रहा है तो व्हाट यू नीड टू डू इट लाइन बाय लाइन सो दैट यू विल बी एबल टू इवेल्युएट कि भाई कोई क्वेश्चन कैसे काम कर रहा है. ओके, सो फॉर दिस वन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नाउ हियर इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू. यू नीड टू टेल कि जो सीक फंक्शन के जो अंदर रेफरेंस पॉइंट होता है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है. एंड देयर इज एडिशनल टास्क फॉर यू. यू नीड टू टेल व्हाट आर द वैल्यूज इट कैन टेक रेफरेंस पॉइंट and what are the naming of those values. तो उन values का क्या क्या मतलब है. Okay. Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.